I hope everybody online can hear my voice and see the screen now. Okay. Let's start with puzzles today. A lot of table based puzzles, where puzzles are usually asked in a lot of entrance examinations in the reasoning section, specifically analytical reasoning, where you are given a set of information. You have to represent the data in a conveniently readable format for yourself. And once you are able to represent the data in a format which is convenient to you, you can answer the questions. And usually there can be 3 to 5 questions based on the same set. So these are usually good things to answer because A, they are easy, B, they save a lot of time. In a smaller span of time, they give you more marks, right? So we are going to take a look at table based questions. What I'll do is I'll put up the first set. I'll just give you a few minutes to think how you can represent this data, right? Try to solve it. And basically what you have to do is there are 5 friends ordering 5 different items and 5 different types of ice creams. You have to match all 3. Who ordered what? There are 3 things to be matched: name of the friends, name of the soups, and name of the ice cream. That's all. The questions will be based on this. So if you can match all 3, your work is done. Give it some time, then I'll show you what is one of the ideal ways of doing it. वही तो सोचने को बोल रहा हूँ और वही तो बताऊंगा थोड़ी देर के बाद. First write whichever way you think it can be done, and I'll show you how I would have done it. I don't know whether still you do it, but पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट बस एंड ट्रेन में जाते थे तो रुमाल डाल के रखते थे सीट पे रिजर्वेशन के नाम पे. डन. बढ़िया. Assuming that you got it right. बढ़िया. But these things are usually easy to confirm because you just have to run through the clues once again and see whether they match. Done. Okay, online, offline, both. Some of you are just starting to think क्या लिखा है, and some of them already completed it. टेबल कैसे बनाए बता लीजिए. हाथों से, पेन से, लकीरों से. लकीर. All right. How many of you are done so far? Just a second. Time up. You literally asked for just a second. The word almost is very dangerous. Yes, but Either you have done it or you have not done it. There's no such thing as almost done. Huh? Done. It is easy. Very easy. Puzzles are actually that simple. Yes, not all. yes, I'm done. Yes, always. I'm done. If you think it is easy, it is easy. So I would sound like a motivational speaker, but sometimes it works. Assume that it is easy and start doing it. I'm done. Sorry. Time up. This was the easier one. Sir, 1 Obviously. minute. Okay, how many of us have managed to complete it? बढ़िया अच्छे. How many of you
हैविंग नो क्लू कि क्या चल रहा है सर, लेकिन ये सब देख के सूप देख के भूख लगी है, भूख लगी है. I agree with you. It is bad to put up such examples on screen when early in the morning आधों ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा. सर एक सेकंड, मतलब 1 मिनट में आया. 1 2 3 Why are you counting 1 2 3 4 5? Literally says there are 5 people, 5 soups and 5 ice creams. ये count करने का. I know he was counting 1 2 3. I said it's given there are 5 people. Why are you counting there are 5 people? तो चिकन एंड उसका आएगा हो गया. Okay, तकलीफ कितनों को हुई? इनिशियल स्टेज हाँ, आया ही नहीं. Okay, let us see. It says there are 5 friends: Avinash, Vijay, Alok, Vivek, and Rajiv. Abey, shh. There are 5 friends who ordered 5 different soups: tomato, chicken, vegetable, corn, and mutton. And followed by lunch. After lunch, they ordered 5 different ice creams. Right? So I have 3 different criteria. One, I have the person. Second, I have soup. And third, I have got ice cream. But what is the common factor? Person. The common factor is person. The same person has a soup and some specific ice cream. So person and soup का मैं relation कर सकता हूँ, and person and ice cream का अगर मैं relation कर दूँ, तो soup ice cream का तो कहीं ना कहीं connection निकल ही आएगा. So for such things, 5 versus 5, the best thing to do in this case is to create a table. And because I have 3 criteria, I will create a 2-sided table where in the middle I will put the person. So my 5 people are Avinash, Vijay, Alok, Vivek, and Rajiv. On one side, I can put the different types of soups, which include, let us say, tomato, chicken, vegetable, corn, and mutton. On the other side, my different types of ice creams can be mango, pista, vanilla, tutti frutti, and cassata. Now somebody could have done this even without the table, but for those who can quickly understand and interpret it and put it, that's fine. For those who struggle, right, this is one very straightforward and mechanical method of solving the problem, जहाँ पे दिमाग कम यूज करने का, पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ, पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ. कैसे? So you go for the first one. Avinash ordered for vegetable soup. So the moment I know Avinash ordered vegetable soup, he cannot, nobody else will be ordering it, and he cannot order anything else. So in such questions, once you put a tick in any one cell, you eliminate the entire row and column. So Avinash ordered for vegetable soup and Avinash ordered for mango ice cream. तो अविनाश के दूसरे आइसक्रीम्स एंड मैंगो के लिए दूसरे पीपल एलिमिनेट कर दो. सेकेंड, विवेक डिड नॉट ऑर्डर मटन सूप. सो विवेक डिड नॉट ऑर्डर मटन सूप, बट डिड नॉट ऑर्डर से क्या ऑर्डर किया वो तो पता नहीं चला. द ओनली थिंग इज आई कैन एलिमिनेट विवेक एंड मटन. सो विवेक डिड नॉट ऑर्डर मटन सूप बट ऑर्डर्ड वेनिला आइसक्रीम. सो विवेक विथ वेनिला आइसक्रीम कैन डेफिनेटली हेल्प मी एलिमिनेट द रो एंड कॉलम. Then Vijay is a vegetarian. So if Vijay is a vegetarian चिकन एंड मटन नहीं खाएंगे. कॉमन जनरल नॉलेज थोड़ा और यूज करना पड़ेगा. सो चिकन एंड मटन एंड आइसक्रीम्स में किसी को कोई पंगा कि सर पिस्ता नॉनवेज होता है या टूटी फ्रूटी, नहीं. आइसक्रीम्स वी जनरली वुड नॉट कंसिडर एनीथिंग लाइक दैट. सो विजय के लिए आई डोंट नो विच सूप, बट विजय इज अ वेजिटेरियन हु ऑर्डर टूटी फ्रूटी. सो इफ विजय इज ऑर्डरिंग टूटी फ्रूटी, द एंटायर रो एंड कॉलम गेट्स एलिमिनेटेड. Now it says the person who ordered corn soup, Rajiv. So Rajiv ordered corn soup. So row and column is out. Ordered cassata ice cream. So Rajiv has ordered cassata ice cream. Ab look at rows and columns which have 4 eliminated things. So I start with ice creams. The only thing available is pista for Alok. So pista for Alok confirms all the ice creams. Right hand side में अगर मैं देखूं तो मटन के लिए सिर्फ और सिर्फ आलोक पॉसिबल है. सो बाकी का हो गया. चिकन के लिए सिर्फ और सिर्फ विवेक पॉसिबल है. तो विजय के लिए सिर्फ और सिर्फ टमाटो पॉसिबल है. दैट्स इट. मैकेनिकली सॉल्व हो गया ये, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा. सो इफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट द टेबल, फाइन. बट इफ यू आर स्टक हाउ टू डू इट, द टेबल इज द इजिएस्ट मेथड. जस्ट मैकेनिकली ऑप्शंस पढ़ते जाओ, टिक टॉक करते जाओ. By the time you read the last clue, most of it would be done.
Now, did everybody get this one? Pakka, easy che, right? Puzzles like this are easy. They are only gadha majuri. Table को draw करके fill करते जाने का. But if you don't make any mistake, you will get it. And the best part, once you get this table, there can be up to 5 questions, and all you have to do is look at the table, answer the question. Look at the table, answer the question. That's it. So if this table is clear, then the questions should be pretty straightforward. Vijay. Vijay. Yay! Chicken. Yay! Hello. See, इसमें तो मैं even without solving the table बोल सकता हूं कि आंसर ए या डी में से ही होना चाहिए, बिकॉज अ पर्सन कैनॉट हैव ऑर्डर 2 डिफरेंट सूप्स. तो आलोक ने मटन किया होगा या तो आलोक ने कॉर्न किया होगा, तो बी और सी तो आंसर में गलती से भी मार्क नहीं कर पाऊंगा. लॉजिकली स्पीकिंग आंसर हैज टू बी बिटवीन ए एंड सी, एंड इफ आई हैव सॉल्व्ड इट आई विल गेट इट that Alok did not order corn soup. You have asked which of the following combinations is false. हाँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है एग्जाम में? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इतना ही पढ़ोगे, आगे फॉल्स नहीं पढ़ोगे, और पहला ऑप्शन देखोगे आलोक एंड मटन. अरे आलोक ने मटन ऑर्डर किया था, यस, मार्क करके आ जाओगे. यू विल मार्क ए विदाउट रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन. दे आर आस्किंग विच वन इज फॉल्स. नॉर्मली अपना माइंडसेट यही होता है कि कौन सा सही है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन बाय इटसेल्फ इज इजी, बट इन योर हेस्ट at least 30-40% of the students mark it incorrectly. So take an extra second, read the entire question properly and then mark it. Anyway, which of the following was ordered by Alok? Pista. You know what is the English word for pista? Pistachio. Pista chotu. Pistachio. Okay. So pistachio. Yay! Which of the following combinations is true? Chicken vanilla. Right? So 3 of them have at least one thing incorrect. All 3 are correct only in the 4th one. Vivek ordered the chicken soup and went for vanilla ice cream. सब दिया. सब में डी था? लास्ट 2 में तो है. Coincidence. So got this one, pretty easy one. Chalo. So if you have understood the table technique of how to solve it, can you do this one? Excellent. Then you should get it in within 30 seconds. No, we have not. ये होगा तो भी मना करेगा अभी. It's the same subject, but different. खड्डा क्यों खोद रहे, सॉल्व कर लेना. गुजराती नाम दे दीजिए. हैं? क्यों? सारे? सायरा गुजराती नाम है, अभिजीत गुजराती नाम है, विजय गुजराती नाम है. आई हैव गॉट अ कजिन कॉल्ड विजय एंड वो कोई एंगल से गुजरात से रिलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट आई एम हिज कजिन. तो विजय दीनानाथ चौहान वाज आल्सो गुज्जू क्या? विजय दीनानाथ चौहान ऐसा थोड़ी चल. These are all pretty common names.
डन 6. ओके Meeta is a हैं मीता इज अ गर्ल आई प्रिज्यूम सो You shouldn't presume, but In this case, you are required to. हाँ हो गया कहाँ पे अटकी गाड़ी हो रहा है, अटका नहीं. शायद या डी में. टेबल की जरूरत है हाँ. सेंटेंस में टेबल से नहीं बनता तो बिना टेबल के सॉल्व करो हर चीज के लिए टेबल जे हाथ में हथौड़ी हो तो हर चीज कील जैसी दिखेगी दैट डजंट मीन के हथौड़ी यूज करना ही है कभी कभी बिना टेबल के भी सॉल्व हो जाता है हो गया हो गया. किसी ने एग्रीकल्चर और सिस्टम्स में पर्सनल कर लिया है. पता ही नहीं. कभी कभी नाक ऐसा पकड़ा जा सकता है और हाथ ऐसे करते हैं ठंडा पानी पीने से गला रफ हो जाता है मतलब वॉइस रफ हो जाता है. I have heard that and I also heard that it is a myth. I don't care. मैं ठंडा पानी पीऊँ. Yes. वो रफ होता है तो वो ना हो क्या फर्क पड़ता है? Technically, ठंडा पानी is not great for the body. डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो Slow down करता है. भाई कब्जियत हो जाएगा. But sir, it can increase your immunity sometimes. What? ठंडा पानी. वो तो कचड़ा पानी पीने से भी इम्यूनिटी तो बढ़ी जाती है इसलिए हॉस्टल वालों का स्टमक कास्ट आयरन होता है कुछ भी खिला दो कुछ नहीं होता है हॉस्टल का पानी पी पी के सर जीएनएल में एसी नहीं है हॉस्टल में. हाँ जीएनएल के हॉस्टल में एसी नहीं है. हाँ तो 45 वाओ मिलेनियल प्रॉब्लम्स सर, दो बच्चे- हमारे हॉस्टल में पंखे नहीं थे सर आपकी बात अलग थी सर. क्यों सर पत्थर के थोड़ी. हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के पानी के टंके से मरे हुए कबूतर निकले थे इम्यूनिटी सिस्टम कुछ नहीं वो इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता सर, वो एक्चुअली ह्यूमन प्रॉब्लम है. ओके Sir, it's compulsory. I mean, first year. even if it is not I would recommend that you do सर एनएलयू में कंपलसरी है. even if it is not I recommend that you live because if you don't you will not be able to survive hostel okay now a university offers 5 specialization disciplines agriculture marketing finance system and personal for PG in some subjects 5 students different specializations 4 different institutes so for such problems whenever you are talking about people studying in an institute or people living in a particular building the type of table that I would generally create is I create boxes depicting either the institute or the building and I fit people inside building because logically speaking you put people inside building you don't place a building on top of a person so logically speaking there are 4 different institutes so I would call them institutes A, B, C and D as given so there are institutes A, B, C and D and then specializations in the institute and I place people in them so the first says D does not provide facility to study agriculture and systems management. That means D provides only marketing, finance or personnel. Then it says only Abhijit and Deepak have taken marketing and they are in different institutes. So Abhijit cannot be okay. So इससे कुछ नहीं होगा but only thing is Abhijit is taking marketing and Deepak is taking marketing and the institutes are different इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता now it says both the lady students are studying in D
So I have to reasonably assume that Abhijit, Vijay or Deepak may not be the ladies, right? So if Saira and Meeta are the ladies and they are studying in Institute D, so Institute D के अंदर Saira and Meeta को डाल दो. That means there are 3 people remaining, 3 institutes remaining, but nowhere it says that every institute must have a student. So I don't know. Now, the next clue is very straightforward. It says Vijay is the only student who has taken finance and studying in Institute B. So Vijay with finance in Institute B is pretty much fair. अबे एक clue को करते हैं ना follow. Now, Deepak does not study in Institute A. So if Deepak does not study in Institute A, then Deepak could either be studying in Institute C or Deepak could be studying in Institute D. Right? So Deepak could be in C or D because definitely not in A. And Deepak B में तो हो सकता है ना? So Deepak could also be in B. So technically other than this he cannot. अभी तक कुछ आया नहीं है, तो यहां तक तो दीपक को मैं ए के अलावा किसी में भी डाल सकता हूं. फिक्स्ड क्या था? विजय वॉज फिक्स्ड, सायरा एंड मीता आर फिक्स्ड. नाउ अभिजीत एंड दीपक डू नॉट गो टू एनी इंस्टीट्यूट टू विच विजय, सायरा और मीता गो. तो दीपक कैनॉट स्टडी विद विजय and Deepak cannot study with Saira or Meeta, and Deepak is not studying in A, which means Deepak with marketing is definitely studying in C. And because Abhijit and Deepak are not studying in the same institute, that means Abhijit with marketing has to definitely be studying in A. Now, I know Abhijit is A with marketing, I know Vijay is B with finance, I know Deepak is C with marketing. That means Saira and Meeta could either be marketing, finance or production. They can't be marketing. No, marketing and finance. Only Abhijit and They Deepak cannot. Now only Abhijit and Deepak have taken marketing. That means even marketing is now eliminated for them. That means it could either be finance or production. But it is mentioned that it is Only student who has taken only finance. student who has taken finance or finance. Kaun? Vijay. Vijay is the only student. Correct. Vijay is the only student who has taken finance. So even finance is now eliminated. So it is fixed that Saira is also in production and Meeta is also in production. That means agriculture वाला बंदा कोई नहीं है and personnel वाला बंदा Saira and Meeta है Bandi. और systems वाला कोई नहीं है. Nobody has taken agriculture or systems. Institutes are offering, nobody is studying. Systems and personnel is not one subject. Systems and personnel. दो है. Agriculture, marketing, finance, systems and personnel. Systems management. कोई बात नहीं. Huh? Nobody understands or uses the Oxford comma anymore, and that's the reason that's a problem. Which one? Oxford comma. And के पहले comma आता है कि नहीं आता है? Anna. आता है तो systems and personnel are different. नहीं आता है तो they are one single subject. चलो. Anyway, doesn't matter in this case. So, did everybody get the table? Yes. Then the questions are pretty straightforward. A. A. Now you have to be very very careful. Option A था and institute भी A था तो पंगा नहीं है. But if Abhijit was studying in either institute B or C, तो आंसर मार्क करने में लोचे होंगे because option B is institute C and option C is institute B. So you have to be very careful what you are marking. Petty tricks. A में D में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. B and C में ऑप्शन को मार्क कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को मार्क कर रहे हो, लोचा हो सकता है. So be very careful in marking the answers. Next one, Deepak भाई. Oh sorry. होता है. Where is Deepak studying? C. Option C. Option C. भगवान बचाए. Options and option numbers match. So Deepak is studying in Petty C. tricks are this examination. is playing Huh? with us. Examination is playing petty tricks with us. They are paid to do such things. मुन्ना 2+2 is equal to 4 कोई नहीं पूछने वाला है एग्जाम. This is and they are precisely doing this to check whether you are paying attention to detail. It's not about solving it but checking how. I mean even if you solve it correctly but mark it incorrectly, what's the use? So whether you are paying attention to such details is absolutely essential. Anyway, which discipline or disciplines have not been opted by any student? Agriculture only. So Both agricultural systems. whether
system and personnel was a single subject or not ये यहाँ पे पता is clarified by this answer. Agriculture and systems, two different again things. only these. Both agriculture and systems. Nobody studies them. Which combination is correct? Meta and personal. बेटा दीपक मार्केटिंग तो दिया हुआ है क्लू में, मीता पर्सनल Meta personal. राइट? Meta personal. So Meeta personnel we found both the girls, Meeta and Syra and D were personnel. So Meeta and personnel is the correct option, correct combination. And which are the specialization opted by 2 students each? Personal. Personnel we identified both Meeta and Syra, and the clue says both Abhijit and Deepak have taken marketing. So technically speaking, both marketing and personnel are opted by 2 students each. Like I said, such puzzles are easy and great things to do in the exam, But these are and mobile phones away. Seriously, inside. These are Yeah, and most of them are like this. tough up this or something what? हाँ, अभी टफ वाला दूंगा ना नेक्स्ट टाइम. Next time. Rhyming sir. Nice. And this is even still okay. In exams, I've known CLAT to give questions like Anu, Amu, Aju, Amu, and Agu. You can't even put short forms. Whatever, but A. See, here you can call them B, P, N, S, and R. वहाँ पे they will purposely give you names where you cannot use short forms. You have to write the entire thing and waste time. Question also, like they, it was Audi and Vijay and I. But you can use A, V, you could, right? But exam में आपको अभिषेक, अभिजीत, अभिजान, अभी ये, अभी वो. How do you distinguish these names? Shakti भी हो. Huh? Proper nouns can be spelled any which way that you want. अहमदाबाद का स्पेलिंग अहमदाबाद है, अहमेदाबाद है, अहमदाबाद है. In Mumbai there is a place called Shiv. How do you spell that in English? Shivri. Huh? Shivri. Not Shivri. There's a place called Shiv, Okay. and it is no. You call it Shiv. It's written in English as S-I-O-N. Sayan. What is? In English, S-I-O-N is Sayan, but the local name you call it Shiv. दादर में exist Sayan is Shiv. Sayan is Shiv. Sir, You take a look at the Hindi and Marathi spelling, it will be Shiv, not Sayan. Sir, done. Very good. Andheri is a great place to stay. Anything is a great place to stay. Can somebody tell me how to pronounce this? What? Soyban. Sindhu What Bhavan. is that? BHA? N? No. नहीं Shiv Bhavan. Shiv Bhavan. Shiv Bhavan. Shiv Bhagwan. Wow. Shivban. So this is a popular French. This is a popular French name, and you pronounce it as Chauvin. So French is a very peculiar. It is the Sanskrit that version of English. It's terrible. So this is Chauvin. It's French. Chauvin. Shanti. Done. Great. How do you pronounce this? Worcestershire. It's some stupid British name, isn't But it it? is a British county team that I know. But and it's also a condiment. It's a sauce. It's also a sauce. But basically it comes from a place. So Worcestershire is what people try. But you pronounce the Worcestershire.
Worcestershire. Even worse is this. Edinburgh. Edinburgh. It's Edinburgh. It's, you may think it is Edinburgh, but the locals would pronounce it as Edinburgh. I would hate if some girl's name is Edinburgh. Bad joke. अभी अपने इधर दादर जाते हैं ना, उधर कहाँ है? But तेरे को दादर क्यों डाला? Okay, how many of you are done with this one? बहुत सारी एक्ट्रेस है. अबे how come here हाथ खड़े हैं उस साइड, मुझसे दूर बैठने वाले कुछ रेस कम आता है क्या वहां पे? ज्ञान के रेस तो मैं अगले बार से वहां पे बैठूंगा. सबको भला हो, सबका भला हो. वही ना, आप बीच में बैठो. नेक्स्ट टाइम से बीच में बैठूंगा, सबका भला हो. इधर. चलो, एनीवन स्ट्रगलिंग विद दिस वन? सिंपल टेबल से बन जाएगा यार, टेबल नहीं, मैंने तो ऐसे करके बना. जैसे बनाना हो, बट अगर नहीं बन रहा है तो टेबल से तो बन ही जाएगा. अल्टीमेट. So 5 ladies, and my ladies are Bhakti, Preeti, Neeti, Shanti and Rati, staying in 5 suburbs of Mumbai, that is Dadar, Andheri, Kurla, Mulund and Borivali, and 5 different occupation: bank employee, actress, teacher, shop owner and guide. So Mrs. Bhakti is a bank employee. ये वाले सबसे बढ़िया क्लूज होते हैं because directly you can start filling in the table. And she stays in Andheri. बढ़िया, इससे ज़्यादा अच्छा क्लू लाइफ में नहीं मिलेगा. Now Neeti owns a bookshop in Dadar. So Neeti owns a bookshop in Dadar, but she does not stay in Dadar. And these places are the locations where they stay and not the location of their shop. So this, don't get confused and say that Neeti in Dadar, because Neeti's bookshop is in Dadar, but Neeti herself does not stay in Dadar. So Neeti Dadar to eliminate karna hai. Now Rati's house is in Kurla. So Rati in Kurla, ding 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 ding, and she is not a guide, eliminated. The teacher Mrs. Shanti, so Shanti Ben is a teacher, so others eliminated, and she lives in Dadar. So Shanti Ben is the one who lives in Dadar. Now before I go to the last one, the guide does not stay in Borivali. Can I say that the guide has to be P, because guide के नीचे सिर्फ एक ही empty slot है and actress का एक ही slot है. So now the guide does not stay in Borivali. So P, who is the guide, does not stay in Borivali. So that is Mulund, which means Neeti has to be Borivali, and my table is complete. बहुत easy था. Easy नहीं, बहुत easy. ये तो guaranteed in less than a minute you should be able to solve. And once you get that, the questions are very, very straightforward. Everybody got this one? Yes. In real life, Andheri is famous, but in the example, answer is Kurla. Shanti. Sorry. Niti. Preeti Ben. Guide. By the way, who wrote the novel Guide, on which the Devanand movie was also filmed? No idea. General knowledge, current affairs, boss. It's not current affairs. General knowledge. It's not even general knowledge. जूते लेके मारूंगा अगर नहीं. Books and authors are not general knowledge. Books and authors are general knowledge. R.K. Narayan. R.K. Who answered that? पता था कि बाजू वाले ने, किसी ने बोला. किसने पीछे किसी So वही मैं बोल रहा, किसको आया पीछे से? किसी का आया नहीं. तो फिर R.K. नारायण जवाब कहाँ से आया? By the way, do you know? बोला था ना कल फर्स्ट बेंच पे नजर नहीं होती, उसने गूगल कर दिया था. Do you understand who R.K. Do you know who R.K. Narayan was? The अबे सुन लो, कभी कभी जीके करंट अफेयर्स भी सुना देता हूँ, काम आएगा. You are thinking of R.K. Lakshman, the cartoonist, who was the brother of R.K. Narayan. They are brothers. हमारी पॉलिटिकल साइंस who wrote the
one into Malgudi. So R.K. Narayan wrote the book Swami and His Friends, on the basis of which the teleserial Malgudi Days was created. The book is not Malgudi Days, the book is Swami and Friends. वो सीरियल अच्छी है ना. बहुत old serial है. Anyway, who is the actress? मिस रति. Rati Ben. मिसिस रति. And where does the guide stay? सर एक बुलंद. कंफ्यूजन था मिस और मिसिस में. हाँ. मतलब शादी ना हुई. That is the traditional British title. शादी हो गई है. Mrs. is used for a married woman. Miss and America में Miss and Ms कुछ होता है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है. British system Mrs. is married, Miss is unmarried. क्या नाम पड़ा? Okay. अरे वाह. थोड़ा दिमाग वापरने वाला क्वेश्चन है. सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम फैक्ट्स लिखें, फैक्ट्स को नोट डाउन कर लें और फिर उसके ये जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से हम फटाफट आना चाहिए आंसर जो करना हो. टेबल कैसे बनाने वो लिख देना ना. It says there are 7 people. You are given their cities, you are given their subjects, and you are given their bank accounts. You have to match 4 things. मैक्सिमम टेबल के अंदर 3 चीजों को आप मैच कर सकते हो, बीच में एंड 2 साइड. यहाँ पे 4 चीजें हैं, तो क्रिएटिंग का 3 डायमेंशनल टेबल इज इम्पॉसिबल. बट व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? ABCD पर्सन. तो जस्ट लिस्ट डाउन द पर्सन्स एंड ट्राई टू मैच थिंग्स and just try to plug things against them, because a complete table may not be easy because 4 things. सेकंड क्वेश्चन में जैसे किया बट उसमें टेबल बना था, यहाँ पे तो वो भी नहीं करना है, सिर्फ पर्सन को ट्राई करो. हाँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. नहीं नहीं अभी तक वो बोल रहे थे ना, इसलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देना चाहिए बीच में. प्लीज टेल मी, ये सारे बैंक्स के नाम सुने हैं? ANZ ग्रिंडलेस. ओके. ANZ ग्रिंडलेस. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, HSBC. So HSBC is the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. कनेडा बैंक का तो नाम सुना होगा ना? कनेडा. उसने तो बुक भी नहीं निकाला है, ओरली सॉल्व कर रही है क्या? हाँ करके बता दे, मान जाऊं. और मोबाइल के अंदर तो कोई भी सॉल्व नहीं हो सकता, उसको तो बैक में ही डाल दो. It's not. Science, physics and chemistry as different subjects. If mentioned as different subjects, then yes, they are different subjects. And one physics, one chemistry. अबे शांति रखो ना 2 मिनट. बहुत ये डिप्रेशन में आ गया. बाद में ले लेना. Put the name of the person and try to match, and then try to match other facts separately. Yeah, but this one is too much of time. करके दिखा दो. I'm not saying it cannot be done. I have seen people do it, but it will take a lot of time. सर देखिए
Done. 2 people, done. space available. ओके रहेंगे मेरे को I have all places in. I have all places in. So now this is Bhopal. भोपाल नहीं है, भोपाल है. भोपाल है सब गए क्यों पढ़ने तू भी जाएगा कहीं ना कहीं तो. इधर ही रहना क्यों? क्यों मतलब बहुत रीजन होते हैं क्या बाहर ना जाने के? हाँ ये भी वन गुड रीजन. मम्मी पापा के साथ पागल है क्या बाबू. Group discussion is not going to help, and anyway exams don't have group discussion components. That's it. Stick with the person. थोड़ा नहीं, सारा आ गया होगा. अगर आ गया तो सारे close match कर रहे हैं. तो सही होना चाहिए. All the clues are correctly satisfying. Method is correct. Done. 3 people so far. 1, 2, 3, 4 done. 5 done. All the clues are satisfied. बढ़िया है. नहीं सर That is just one. I need the banks and the subjects as well. Are you doing पहले सारे places? फिर हाँ. It will take too much of time. Everything has to be done simultaneously. अबे कॉपी ना क्या करेगा कॉपी करके? क्या इसी चीज से तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है. क्यों कॉपी करना है? सीख मैं करवाने वाला हूँ. यहाँ पे आंसर लिख के कोई फायदा नहीं है. देयर आर नो फैक्ट. दिस आर नॉट फैक्चुअल क्वेश्चंस के सीख के रट्टा मारना है. मेथड इंपॉर्टेंट है. सो मेथड कैसे करना है वो सीखो. आंसर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो 60 seconds more and then we are doing it. क्या मैं बोला उस हिसाब से 60 सेकंड मेरी 60 सेकंड आराम से गुस्सा मत करो. तोड़ो मत. डंडन. जल्दी से एक ऑस्कर अवार्ड दे दो. इंदौर एंड उज्जैन वाले नहीं जा रहे हैं भोपाल ग्वालियर का आई हैव आगे से ब्रेन सिस्टम और इंदौर डॉट मार दे. चलो. नहीं बता सकते. So totally it says there are 7 people A, B, C, D, E, F and G. So A, B, C, D, E, F and G are the 7 people. Now it says 2 of them stay in Indore. So in places I've got 2 places where Indore has to be done. 2 stay in Ujjain, 2 stay in Bhopal and 1 stays in Gwalior. So I have to fit accordingly. Then it says 2 of them study science, 2 of them study mathematics, 1 studies physics, 1 studies chemistry and 1 studies statistics. 7 subjects. And then it says one of the maths students and a chemistry student have an account in the Times Bank.
So whoever, one of the maths student I can put in the Times Bank, and only a single chemistry student. So whoever is the chemistry student will also be in the Time Bank. Fit so far. Now it says others have their accounts in separate banks. So Hong Kong, ANZ, SBI, Canara, Bank of Baroda. ठीक है, उसका कुछ कर नहीं सकता because 7 individual banks हैं. 6 individual banks, 1 is repeated. Okay. Now it says Indore and Ujjain residents do not go to SBI, Canara or Bank of Baroda. That means if you are from Indore or Ujjain, then which are the banks which are possible? Either you can be in the Hong Kong Bank, or you can be in the ANZ Bank, or you could be in the Times Bank. You cannot be SBI, Canara or Bank of Baroda. So automatically Indore and Ujjain के लिए 3 ही banks possible हैं, 3 तो ऐसी eliminated है. For the time being उसके आगे नहीं जा सकता. Next it says the science and maths students stay in Ujjain or Bhopal. So science and maths students जो हैं वो या तो उज्जैन में होंगे या तो भोपाल में होंगे. दैट मीन्स जो उज्जैन एंड भोपाल के खिलाड़ी हैं वो या तो साइंस पढ़ेंगे या तो मैथ्स पढ़ेंगे, दूसरा कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता. ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट फिलिंग इन द ब्लैंक बिकॉज द नेक्स्ट वन सेज दैट डी हैज हिज अकाउंट इन SBI एंड F हैज हिज अकाउंट इन द हांगकांग बैंक. सो SBI एंड हांगकांग बैंक का एक एक बंदा मिल गया, बट अगेन उसके आगे आई कैन नॉट पुट एनी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इट सेज C is a resident of ग्वालियर. तो C का बैंक मुझे पता है, हाँ. सो C is Canara Bank, C is a resident of ग्वालियर and C studies physics. That means ग्वालियर is done and physics is done. एक ही ग्वालियर एक ही physics है, so that is automatically associated with C. C is done. Now B and E stay in Ujjain. So if B stays in Ujjain and E stays in Ujjain, that means the 3 of them have to be Hong Kong the 2 of them are either Hong Kong, ANZ or Times Bank. It also says that B has his account in ANZ. So if B has his account, so sorry, एक second. Ujjain, so the third thing is the city, right? So B and E stay in Ujjain and B has his account in ANZ Grindlays. So B has his account in the ANZ Bank, right? So ANZ Bank and Ujjain एक एक निकल गया, and the second person of Ujjain is also done. And so this is pretty much straightforward. B and E stay in Ujjain and B has his account in the ANZ Grindlays Bank. Okay, next it says D studies maths. So D studies maths, okay, and D studies maths but not in the Times Bank. तो पहले वाला maths eliminate हो गया. And it says that G studies science. So if G is studying science, I have put it so far. This is all the information that we have with us in our hand, right? अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? Tell me. सर डी का भोपाल होगा. नाउ एक एक करके अगर हम सब्जेक्ट्स एंड सिटीज को देखें, सो डी इज स्टडीइंग मैथमेटिक्स एंड वी नो दैट पीपल स्टडीइंग मैथमेटिक्स आर ईदर उज्जैन और भोपाल, एंड उज्जैन तो दोनों ही निकल चुके हैं. सो डी हैज टू बी स्टडीइंग इन भोपाल विथ मैथमेटिक्स. दैट मीन्स भोपाल एक और एलिमिनेट हो गया, राइट? And it says that those who are studying science and mathematics are studying in Ujjain or Bhopal. That means G, who is studying in science, has to be either Ujjain or Bhopal, but Ujjain is already done. So G also has to be studying in Bhopal. So मैथमेटिक्स के मेरे एक आ गया, साइंस का एक आ गया, उज्जैन दोनों कन्वर्ट हो गया, भोपाल दोनों कन्वर्ट हो गया. Is there any other thing left which I can put in terms of city? Yes, I can, because the only 2 cities left is Indore. So A also has to be in Indore and F also has to be in Indore. And AF, and also I know that F is in the Hong Kong Bank. तो F का Hong Kong Bank भी eliminate हो गया. That means what is left now? G is in Baroda Right? and E is in Times. उज्जैन वालों का बैंक मिल गया, उज्जैन वाले का ANZ मिल गया, उज्जैन वाले का एक बैंक बाकी है. इंदौर वाले का भी बैंक्स क्या है, एक इंदौर वाले का हांगकांग बैंक तो हो गया, दूसरे इंदौर वाले का भी बैंक बाकी है, राइट? सो टाइम्स बैंक किसका है?
उज्जैन वाले का है या इंदौर वाले का है? वाई उज्जैन? बिकॉज ए और ई का टाइम A and why would A and E be times? बिकॉज ए इज इन इंदौर. But I already okay. A and E is They are times studying कैसे? chemistry and one is studying maths. It's in the second line of the paragraph. Right? I know that those who are studying कौन सा second line का है? So one of the maths and one of the chemistry students are in the times bank. केमिस्ट्री. Now एक मैथ्स वाला तो मुझे मिल गया, भोपाल में है. Who is the other one? एंड एफ इज इन केमिस्ट्री एंड टाइम्स बैंक वाला मैं किस में डाल सकता हूँ? केमिस्ट्री आप डालोगे ए में. सो ए वाले को मैं केमिस्ट्री डाल के उसको टाइम्स वाला जो है वो इंदौर या उज्जैन में से ही है. और इंदौर के लेकिन- साथ ऑलरेडी हांगकांग चला गया है. सो बट इंदौर के साथ टाइम्स भी तो हो सकता है नहीं, पर already और उज्जैन के साथ भी तो टाइम्स हो सकता है. हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री वाला इंदौर में है और उसका टाइम है. कैसे कंफर्म कैसे हुआ वो? कंफर्म इसीलिए है क्योंकि जो F वाला इंदौर है उसमें ऑलरेडी हांगकांग पहुंच गया है. और एक फिर सेकेंड इंदौर- वन बाय वन. एफ वाला हांगकांग है एंड एफ वाला इंदौर है. सर सिंपल. तो जो टाइम्स वाला ये बैंक है, हाँ. इट कुड आइदर बी इंदौर और इट कुड बी उज्जैन. हाँ, इंदौर वाला ए हो सकता है या उज्जैन वाला ई हो सकता है. हाँ, दोनों में हो सकता है क्योंकि एक मैथ्स है और एक केमिस्ट्री है. हाँ. ए केमिस्ट्री है और ई मैथ्स है. So it says that one of the maths and one of the chemistry has in Times Bank. So maths and chemistry Times Bank में दो लोगों का बाकी है. बैंक्स कितने बाकी है? केमिस्ट्री इज इन ए बिकॉज़ साइंस Now hold on. G वाला Times Bank नहीं हो सकता नहीं हो. because Times वाले maths and chemistry इसका science है. So because G cannot be that, that means both A and E have to be the Times Bank. बड़ौदा. जी बड़ौदा. So the moment I know both are in the Times Bank, the only bank which is left is Bank of Baroda. तो G का तो मेरा Bank of Baroda हो गया. अभी अब what is left? उज्जैन में साइंस. Times Bank is done. Now, A is in chemistry. Indo एक सेकेंड. उज्जैन एंड भोपाल आर साइंस एंड मैथ्स. हाँ, भोपाल इज So ऑलरेडी डन. साइंस या मैथ्स यहाँ पे होगा, साइंस या मैथ्स यहाँ पे होगा, राइट? एंड दूसरा भोपाल, ये तो साइंस फिक्स्ड है एंड इसका मैथ्स फिक्स्ड है, तो इन दोनों में से एक साइंस एंड मैथ्स होगा. दैट मीन्स ई का कुछ, एफ का कुछ बाकी है एंड ए का कुछ बाकी है. हाउ डू आई नो? बिकॉज इंदौर वाले का कोई सब्जेक्ट फिक्स्ड है नहीं, नहीं. बट इंदौर वाले का इतना Science फिक्स्ड bank है का है. कि या तो मैथ्स है या तो केमिस्ट्री है. सो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में से अगर कुछ फिक्स्ड है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज टू गो फॉर एफ. एफ के लिए तो स्टैटिस्टिक्स के अलावा कोई फिक्स नहीं हो सकता. और ए के लिए मैथ्स सी है. के लिए केमिस्ट्री. एक सेकेंड. नाउ टाइम्स बैंक वालों में से ई का के पास केमिस्ट्री तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स दिस वन हैज टू बी मैथ्स फॉर द टाइम्स बैंक क्राइटेरिया. दैट मीन्स ही हैज टू बी केमिस्ट्री फॉर द. साइंस है. और उधर साइंस है. एंड वंस दिस इज डन, मेरा मैथ्स कंफर्म हो गया एक, मेरा मैथ्स कंफर्म हो गया दो, तो ये मैथ्स नहीं हो सकता, ये साइंस होना चाहिए. डन. हो गया सेम सेम. होल्ड ऑन. 50% of the जनता not paying attention, 50% of the जनता lost. तो बाकी का अच्छा, मैं बोल. कहाँ पे पहुंची थी गाड़ी? हाँ बोलो. देखो सेकंड लाइन में क्या है? One of the math students and a chemistry student have an account in Times अरे Bank. वो पता चल गया, but A केमिस्ट्री क्यों है और मैथ्स क्यों नहीं है? E is Ujjain. Hold on. E is Ujjain Oh, and Ujjain can only be science and maths. E is Ujjain, वो फिक्स हो गया था. एंड E उज्जैन वाले साइंस या मैथ्स ही हो सकता है. तो E उज्जैन से केमिस्ट्री तो हो नहीं सकता. तो टाइम्स का है तो मैथ्स ही होना चाहिए. Did everybody get this one यस. online? Most of you who have done it have got it. yes sir, got it. यहाँ पे anybody needing an revision of this entire thing? Sir, ये और confuse आएंगे, इसका ठीक है. सर ये अच्छा वाला है. ये टफ वाला है लेकिन समझ को चाहिए. एक बार शांति से विदाउट योर
साथी लोग अकेले में ट्राई करोगे आ जाएगा, बट you need to juggle between the clues a lot, and once you have got this, getting the questions is pretty straightforward. ये बहुत अच्छा है। टाइम बड़ोड़ा ANZ अबे इसमें तो है नहीं। साइंस के 2 नमूने हैं। बड़ोड़ा साइंस के 2 स्टूडेंट्स हैं, तो जिनमें जो ऑप्शन होगा वही मैं करूंगा ना। ले आपने नमूना साइंस none of the above. I इजी वाला, इजी वाला। इजी वाला यस, डन, बढ़िया। हाँ, ये कहाँ पे मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। 5 ही है। हो गया मेरे भी 5 आ रहा है। मेडिकल है ही नहीं कहीं। एक मिनट अरे हाँ। ब्रो ज्वेलरी में से बाहर आ जा। एक सेकेंड नहीं तबला नहीं बजा था वो इंजीनियर भी नहीं है फ्लूट नहीं बजा गिटारिस्ट भी नहीं है तो हाँ तो संजय तबला बजाता है टू लॉन्ग। तो अक्षय बजाता है सितार। ऐसे करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। टेबल बना, 30 सेकेंड्स में डन। संजय की तो बात ही नहीं है। गिटारिस्ट इज नॉट इन लेट्स सी। पता है ओके, सर अभी मत करो अभी मत रुको यार वो देखो मेरा तबला वाला पूरा हो गया। अरे 2 मिनट शांति रखोगे तो 30 सेकंड में हो जाएगा। सर संजय की तो बात ही नहीं सर है। खाली जरूरी है। सर जरूरी है पूरा खाली है सर संजय। तो हो गया सर। दोनों में ऑप्शन में सीट होता है। रुक जाओ bro। अक्षय तो फ्लूट ही बजा रहा था। हो गया डन ऊप्सी हो गया। सर साइड में से कितना लागू क्या नहीं बजा गलती से ऊप्सी हो गया। ओके, सर
So 5 gentlemen, Ajay, Bijay, Vinay, Sanjay, Akshay, 5 different professions and 5 different musical instruments. So Ajay is a doctor. Technically speaking, doctor means medical profession, right? So Ajay is a doctor and can play the sarod. Then the sitarist is not an engineer. So engineer does not play sitar and the sitar player is not an engineer. Now Vinay and Bijay are not architects. So Vinay and Bijay are not architects and they cannot play the tabla. Bijay can play the violin. So Bijay plays the violin. Okay. And Akshay is a lawyer. Akshay is a lawyer and can play the flute. So Akshay can play the flute. तो तबला वाला ऑप्शन जो है, तबले के लिए तो सिर्फ और सिर्फ संजय पॉसिबल है. दैट मीन्स सितार इज विनय. एंड इफ विनय इज प्लेइंग द सितार, विनय इज नॉट एन इंजीनियर. सो बाय डिफॉल्ट ही इज एन इंजीनियर, which means Bijay can be the engineer, which means Sanjay is the architect. Game over. And Vinay is CA. हो गया. अरे आई बाय मिस्टेक फ्लूट और सितार उल्टा सीधा कर दिया. मस्त था. Paying attention to detail is very easy in this one because literally table has to be filled in. टेबल से अच्छा तो ये है. Now, one last, I'm going to skip the next one and give you another one which is more typical of the type of names which will be given in the exam. ये तो obvious है, चलो. I'm not even going to go through the questions. अबे टेबल कंप्लीट हो गया, फिर क्वेश्चंस में क्या स्यापा है? ये सब सर हर एक क्लास के रोल नंबर 1 पे खड़ा कर दिया सर ये लोग. Exam में typically the names will be like this so that you are not able to put shortcuts of ABCD. Why would they make our life easier? Exactly, they are paid not to do so. प्रॉब्लम क्या हम लोगों को? आसान थोड़ी करना है लाइफ को. There is certain सर अभी नहीं होगा. एक सेकंड. सर ये क्वेश्चन में फॉल्ट है. अरे नहीं भाई. क्या fault है? उनका शांति रखो लाइफ. अभी नहीं. भावनाओं को समझो. V, Y, more or less the same thing. They are not just a typo है यार, ठीक है. एग्जाम में ऐसा होगा ही होगा. एग्जाम में गारंटीड होगा ऐसे. ये तो बहुत इजी है. हाँ डन. रुको. सर आप सातवां नाम किधर है? सातवां कौन? अमन है. Done. नाम में कंफ्यूजन. नो. Nobody wants to make life easy. Done. Okay. If it matches all the clues, then your sequence has to be correct. सेम. अरे मतलब अभिनव अभिनय. हाँ ठीक है. V सब एक. मैंने एक नाम 2 बार लिखा. सर क्वेश्चंस Questions क्या हैं? अब Two possibilities somebody is giving me.
Do both the possibilities match all the requirements? अमन नहीं अमन होगा ना वाह सबका अभय ना हाँ सॉरी अभय होगा क्योंकि बीच में एक आदमी होगा ना अमन अमन नहीं अमन 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 सेकंड कौन है अभिनय होगा अजय अजय अभिषेक। अजय अभिषेक इसलिए मैंने सारे हाँ, ये सही है Yes. हमारे अभिषेक अरे अभिषेक अमन चलो सीक्वेंस पहले देख लेते हैं. हाँ भाई सर सीक्वेंस सीक्वेंस अगर करेक्ट है तो आंसर्स तो आ ही जाएंगे. It says that there are 7 boys: Abhay, Amar, Aman, Avinash, Ajay, Abhinay, Abhishek, and they reach the school in a certain sequence. Now it says Abhay reaches immediately before Amar. So wherever Amar is, just before Amar you have Abhay. We are going first person on top and last person at the bottom. So Abhay reaches immediately before Amar, but does not immediately follow Abhinay. So the position above just above Abhinay is not followed by Abhinay. Now Avinash is the last one to reach the school. So among the 7 people, Avinash is definitely the last one to reach. And it says that Abhishek follows immediately after Amar. So wherever Amar is, the next position is followed by Abhishek and is subsequently followed by Aman. So Aman has to be immediately after Abhishek. So 4 people in a row: Abhay, Amar, Abhishek and Aman. Right? So I can have, if I start with here, if I put Abhay, Amar, Abhishek and Aman in this position, where can I put the remaining people? अमन के बाद सीधा I can put Abhinay in any one of these positions, and who is left in this particular group? Ajay is left, so Abhinay and Ajay can be in these positions. नहीं सर अभय के बाद एक जन होगा उसके बाद अभिनय होगा और अभय के पहले 2 जगह छोड़नी पड़ेगी. In short, क्या ये position, can I put the first 4 people in this position? No, Why not? because Abhay has to have one person before him and before him Abhinay. So if I interpret this clue as Abhay reaches before Amar but does not immediately follow Abhinay, it means he follows Abhinay but does not immediately follow Abhinay. Right? So if I take that as the interpretation, that means my 7th person was definitely fixed. Right? My 7th person kaun tha? Avinash was the last one. And I definitely know that Abhay has to start in the 3rd position. So Abhay has to be followed by Amar. Amar is followed by Abhishek. And Abhishek is followed by Aman. And I know Abhay ke immediately pehle Abhinay nahi ho sakta. That means Abhinay has to be in the 1st position. Which means Ajay is left with the 2nd one. So the immediate thing is interpretation of this clue. Where is Does not Abhinav? immediately... Huh? Where is Abhinav? Abhinav, Abhinay, same person. So this clue does not immediately follow. It means he follows but does not immediately follow. That is the only possible which helps. Because if I do not take that interpretation and I go with the options, तो 1-2 क्वेश्चंस में डेटा, एक आध में डेटा inadequate है, but सारे ऑप्शंस में डेटा inadequate नहीं है. So the options will help you identify whether they have taken that interpretation or not. So here it's important to go through the questions to identify whether you need to interpret it like that or not. So that's it for the day. Here guys, wait for a minute. Online, we will be catching up at 11:30 for GK Current Affairs. Rishit, it depends on all the questions. If there is a question where data inadequate is not an option, and then it will help you understand what is the assumption that has to be made. Chalo.